we have to start the chapter of magnetic fields. This is chapter number 28, and this chapter is related to the magnetic fields. First of all, there is an introduction. You know, there are countless number of applications where magnetic fields are being used. These countless applications are given in the paragraph, first paragraph: magnetic recording, memory devices, okay, computers, headphones, speakers. एक्सक्यूज मी सर, ये Yes, सर प्लीज 5 मिनट वेट करें, कुछ बच्चे हैं अभी उनसे ज्वाइन नहीं हो रहा. I'm just giving you 28.2. It is given that what produces a magnetic fields. So there are two ways in which the magnetic fields can be produced. First of all, um, the moving charge particle produces magnetic field. Okay, so whenever the electric current is passed through a wire, that wire is becomes electromagnet. Okay, so similarly, the moving charge particle, if the electron is moving or the proton is moving, that moving charge also produces a magnetic field. So magnets are two kinds of magnets. There are two kinds of magnets, permanent magnet and electromagnets, which are also known as temporary magnets. So in the permanent magnets, the permanent magnets are used in the refrigerators, and there are so many examples where the permanent magnets are used. But there are many examples in which electromagnets are used. When the current is applied, then they becomes magnet. Okay. So first of all, here we are uh, first of all here we are uh, now, according to your syllabus, we are सर आवाज नहीं आ रही आपकी. एक्सक्यूज मी सर, सर अभी आपने पीछे जो भी बोला उसकी आवाज नहीं आई. which is the definition of magnetic fields. 28.3. You can see on the screen. So, first of all, you know that how the बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से बनती है. तो जी जी ओके, हम डेफिनेटली 8.3 और इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया.
Electric field is electric force acting on a charged particle मैग्नेटिक कोई चीज नहीं सर है। आपकी सर ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैग्नेटिक फील्ड कोई थी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने जो डिफाइन किया था वो फोर्स पर यूनिट चार्ज से किया था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि मैग्नेटिक चार्ज टाइप की कोई चीज नहीं होती। बल्कि यहाँ पर आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो। ठीक है, तो अगर एक मूविंग चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अगर आप उसमें रखें, तो हमें ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड और अगर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल के दरमियान अगर जीरो एंगल हो तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। ठीक है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल कोई एंगल बना रहे हो तो फिर उस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से कोई ना कोई फोर्स लगती है, और दिस फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन V एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर V और B के दरमियान 90 का एंगल हो तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगती है। ठीक है, तो इससे हमें पता लगा कि यहाँ पर V साइन फाई इन्वॉल्व है। ठीक है, और अगर हम इसको, और V साइन फाई का मतलब हो गया कि V और B के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। तो यहाँ से हम ऊपर जिस तरह हमने E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू लिखा, यहाँ पर हम लिखते हैं B इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू मल्टीप्लाई बाय V। ठीक है, एफ बी इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय वी, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज पर यूनिट वेलोसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस लिहाज से हम देखें तो बी इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू वी बनता है और एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी बनता है। ठीक है, एंड क्यू वी क्रॉस बी मीन्स क्यू वी बी साइन ऑफ फाई। इट मीन्स फोर्स, because here is the cross product is involved, therefore V and B are the force, magnetic force acting on a charged particle will always be perpendicular to V and B. अब V और B के दरमियान कोई भी एंगल बन रहा हो, okay, the force will always be perpendicular to V and B. So uh, next, find the magnetic force on a particle. So if uh, we know that magnetic field is proportional to the charge and speed. So you can see from figure from equation 28.3, if charge is more, the magnetic force will be more. If the velocity of the charge particle is more, then again force will be more. If the magnetic field is more, the magnetic force on a charge particle will be more. Next page. Okay, so if you know, if the sine phi is equal to 0 in the previous equation, phi 0 means velocity and magnetic field and the velocity of the charge particle are making angle 0. So if the angle is 0, then
If the angle is 0, then there is no force acting on a charged particle. Okay, so if the angle is 0, or if the angle is 180 degree, ठीक है, if the phi is 0, sin 0 is equal to 0, and sin 180 is also equal to 0. So if V and B are parallel or anti-parallel, the force acting on the charged particle is 0, and force is maximum when the angle between them is equal to 90 degree. So equation 28.2 also tells us plus the direction of the magnetic field. So as I told earlier, that magnetic field, the magnetic force will always be perpendicular to V and B because the cross product is involved between these two. So this is also shown with the right hand rule. So if you can see in the figure A that if you move your hand, from if for example your hand is V and you move it from V to B, okay, V to B, then the thumb will indicate the direction of force. Okay, and but if you do it in the opposite direction, if you do it in the opposite direction, then the thumb will be down and the magnetic force will be down. So you can see from all these figures that the remember this rule, that V cross B will give you the direction of force. Okay. After that, uh, there is another point, that FB never has a component parallel to V. देखें, फोर्स जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, वो हमने ऊपर देखा, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है V के और B के. ठीक है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V एंड B. उसके हमेशा परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है, उसके हमेशा परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि फोर्स का कोई कंपोनेंट अलोंग बी नहीं होगा. ठीक है, फोर्स विल नेवर हैज अ कंपोनेंट पैरेलल टू बी. अगर तो देखें, फोर्स अगर तो वेलोसिटी कुछ इस तरह से होता है कि फोर्स वी और बी के दरमियान हमेशा परपेंडिकुलर ना होती और कोई एंगल बना रही होती, तो उसके कंपोनेंट बनते हैं ना अलोंग द वेलोसिटी. ठीक है, लेकिन जब उसके वो है ही परपेंडिकुलर, हमेशा वी और बी के हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स बनेगी, तो इसका मतलब ये होगा कि पैरेलल टू वी को मैग्नेटिक फोर्स. ओके, दिस मींस दैट एफ बी कैन नॉट चेंज द पार्टिकल स्पीड v. अब इसका मतलब ये है, क्योंकि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है v के, तो फोर्स का कोई कंपोनेंट v के अलोंग नहीं है. इसका मतलब ये फोर्स उसकी v को, वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगी. मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगी, वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है. ठीक है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन आता है एफ बी आती है, वो उसकी वेलोसिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से नहीं आती, बल्कि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन आता है. ठीक है, तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पैरेलल टू v. ठीक है, अगर v के पैरेलल होता तो वो फोर्स उस पार्टिकल पर लगती और उसकी वेलोसिटी चेंज होती, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता. ठीक है, लेकिन फोर्स का कोई कंपोनेंट v के अलोंग नहीं है, इस वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होती है. ठीक है, ओके. आफ्टर दैट, to develop a feeling of equation 28.2 and 3, the example of bubble chamber is given. You can see from here that
here is a gamma particle of specific energy is coming, and at this point the pair production takes place. You know, pair production is the phenomena in which electron and positron are generated. So this is a bubble chamber. This here is a liquid. This one black part is a liquid, and the gamma ray is coming into this liquid. It is a special liquid. So at this point, and magnetic field is applied perpendicular to this path. Okay. So when electron, when pair production takes place at this point, the electron and positron are generated. If electron moves in this direction, the positron will move in this direction because they have opposite charges. Okay. So after that, uh, when the charge particle moves in a magnetic field, then it moves in a circular path. Okay. It moves in a circular path. So this particle is also moving in a circular path, but the radius of circular path is going to decrease. You see here, it is going to decrease, and here it is also going to decrease. Okay. So this decrease in the radius is due to the fact that the particle is moving in the liquid. So due to the collisions with the liquid, its velocity decreases, and whenever the velocity decreases, the radius of the charged particle also decreases because it has then less force on it. So you can see from here that when a charged particle is moving, when the charged particles are produced here and they move with a certain velocity, due to the opposite charges, they move in the opposite direction. Electron is moving in this direction, positron is moving in this direction. Okay. So in this way, uh, you can see that uh, you can see that and they also move in the opposite directions. Okay. So from the equation above, we can also define the unit of magnetic field. Here you see 1 Tesla magnetic field. Tesla is a unit of magnetic field, and 1 Tesla is equal to 1 Newton over Coulomb. This force, here is a charge, and here is a unit of velocity. So this Newton over Coulomb and meter per second, this this quantity is known as 1 Tesla. This quantity is known as 1 Tesla. And you can also take this second with Coulomb. Coulomb per second. You know, Coulomb per second is also known as ampere. So Newton per ampere meter is also a unit of magnetic field, which is known as 1 Tesla. So 1 Tesla can be defined in this way and in this way also. Next page, please. And there is another unit of magnetic field which is also known as Gauss. So 1 Tesla, is equal to 10 raised to the power 4 Gauss. And also know that there is the magnetic field of the Earth, and magnetic field of the Earth is around 1 Gauss. ठीक है, इसकी जो average value है, the average value of the magnetic field of Earth is around 1 Gauss. So here is a table in which the magnetic field of many situations are given. So you can see if there is a neutron star, the magnetic field is 10 raised per 8 Tesla. Near big magnet, it is around 1.5 Tesla. Near small bar magnet, it is 10 raised per minus 2 Tesla. At the surface of the Earth, it is 10 raised per minus 4 Tesla, which is equal to 1 Gauss. It is very uh, low value of magnetic field. So in interstellar space, it is around 10 per minus 18 Tesla. Okay, and magnetically shielded room 10 per minus 14 Tesla. इस तरह के कई रूम बनाए जाते हैं, ठीक है, कि उस रूम में आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को बहुत रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, तो वो कहलाते हैं मैग्नेटिक शील्डेड रूम्स.
So magnetic shielded rooms, you can reduce it to 10 raised to the power minus 14 Tesla. Okay. So another concept with the यानी फिर किसी ये में magnetic रूम्स रिड्यूस बनाने करते का हैं? क्या फायदा होता है? जी ये रूम्स बनाने का क्या फायदा है? बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहां पर आपको मैग्नेटिक शील्डिंग करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि अंदर कोई एक्सपेरिमेंट्स इस तरह के होते हैं बाज़-औक़ात वो इस तरह वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उन्हें एक्सपेरिमेंट्स को डिस्टर्ब कर रही होती है, ठीक है? तो उस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को का इफ़ेक्ट मिनिमाइज़ करने के लिए ये मैग्नेटिक शील्डेड रूम बनाए जाते हैं। ओके? यानी शील्डिंग किस तरह करते हैं? इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, तो मतलब ये आपके टॉपिक में नहीं है अब इसको बनाना इसकी कंस्ट्रक्शन इसकी, या आप वैसे अपने नॉलेज के लिए आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, ठीक है? शील्डेड रूम्स। टाइम हमारे पास ज़रा शॉर्ट है, तो मैं ज़रा दूसरी तरफ ज़्यादा नहीं जा रहा। ओके, बिकॉज़ वी हैव टू फिनिश एट 10 o'clock. ओके, सो द नेक्स्ट इज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। जिस तरह हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को हमने देखा था, डिस्कस किया था, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी होती हैं। तो इस द डायरेक्शन ऑफ the direction, it gives us the direction and the magnitude of the magnetic field. Okay, and the direction of the magnetic field at any point is always tangent to the magnetic field line, and spacing of the line will give you the magnitude. You know this. You know, if the number of lines per unit area is more, then the magnetic field is more. If the number of magnetic lines per unit area are small in number, then magnetic field will also be weak. Okay, so in this figure, magnetic field line pattern of a bar magnet is given. ठीक है? You know this, you have done this in previous classes. Similarly, the magnetic field, uh, you know, there is no magnetic monopole. You cannot separate north and south poles. अगर आप इसको बीच में ब्रेक करेंगे, you know, उस ब्रोकन मैग्नेट के नॉर्थ साउथ बन जाएंगे, नॉर्थ साउथ, ठीक है? नॉर्थ और साउथ को आप सेपरेट नहीं कर सकते। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल फॉर्म, मैग्नेटिक डाइपोल फॉर्म, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। यहाँ तक कि आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की भी मैग्नेटिक नेचर होती है, अगर आप इलेक्ट्रॉन के लेवल पर भी चले जाएं, सिंपल एक इलेक्ट्रॉन ले लें, तो उस इलेक्ट्रॉन का भी नॉर्थ और साउथ पोल बन रहा है, ठीक है? तो मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट exist, it always exists in dipole form, magnetic dipole. So there are many shapes of the magnets: horseshoe magnet, C-shaped magnet. These shape of magnets are also given on the next page. Okay, so earth also behaves like a magnet, you know this. Okay, earth also behaves like a magnet. So अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, उस तरफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का साउथ आ रहा होता है, ठीक है? और अगर और जो अर्थ का साउथ पोल है, उस तरफ अर्थ का अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ होता है, इन दोनों के दरमियान भी बन रहा होता है, जिसे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है वो कहा जाता है, ठीक है? तो ये चीज इट इज गिवन इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक. ओके, so now come to the page 740. I will share it now. 10 मिनट्स में मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे मीटिंग, ठीक है? ओके, 28.4 टॉपिक इज अबाउट द क्रॉस फील्ड्स, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्रॉस फील्ड्स मीन if E and B, electric field and magnetic,
Okay, if E and B are perpendicular, then it is known as cross fields. Okay, so cross fields can also produce magnetic force or a net force on a charged particle. So whenever a charged particle enters into a cross field, there is a force on a charged particle. So J.J. Thomson in 1897 in the chemistry used the electrons. 7 shows a modern simplified version of Thomson's experiment apparatus, a cathode ray tube. Okay, so this one is the cathode ray tube. इस फिगर को हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So first of all, this tube is a vacuum tube. Here is a vacuum inside it because this tube is connected to vacuum pump, and with the help of vacuum pump, all the air from it is pumped outside this tube. Here is a filament, and here is a battery. This battery heat heats up this filament, and the electrons are generated. Okay, so these electrons are attracted by this positive potential, of the battery, of this battery, and here is an aperture. Aperture is used to make the beam of electrons. So this beam of electron, then due to the potential and due to the acceleration of electron, this beam enters here in this region where electric and magnetic fields are applied. Here is a positive plate, this one is the negative plate, and these lines with arrows show the direction of electric field. Okay, so this is the direction of electric field. This cross, this cross, these lines the magnetic field is into the page of into the page. Magnetic field is directed into the page. So the cross field in this and magnetic field is particular field. When the charge particle to these cross fields, then the electric and magnetic force acts on it. Electric and magnetic force does not act on it. It will continue its path and it will go and thus center of this screen. Electron hit the generated and we can see the spot of light here. Spot of light indicates the electrons are coming in this direction. Okay. So electric when the electric field is stronger, then this positive potential the electron upward. If this electron attracted upward, the path of the electron will be. It means the electric force will attract the electron. Electron will hit here. If the field is stronger, the magnetic field is in this direction, and from the left hand rule, the
field and magnetic field take those two values एक्सक्यूज मी सर, in सर which आपने पिछले 2 मिनट में जो भी बोला है उसकी आवाज नहीं आई। Yes, sir, exactly. अच्छा जी ओके मैं थोड़ा वेट करें क्योंकि ये मीटिंग टाइम जो है ये खत्म होने जी